Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. Good We are morning, fine. sir. And what We are about Good you? fine. morning. What Yeah, about thanks about you? I'm also fine. I welcome you all in the session from Sun Valley School. In this session, we are going to study English subject. So, Yes. can you open the book. What we are supposed to do, what we are supposed to study today. Chapter number 6 is going on, Sir, and in our last class, what we did study. sir, about the syllable pronunciation. Your voice is very low, Abhishek. Try to speak loudly. Pronunciation junction. Pronunciation junction. Okay. Okay. Let me open the section. In our last class, we completed the pronunciation junction, and even there were many exercises related to this topic. So let me confirm that whether you all have completed these exercises or not. I have received some of the homeworks from many persons in the group, but whether is there any issue with any questions, if anybody are having any issue with any question or any words, they can ask. Should I move ahead on the next section, that is a grammar junction? Yes, sir. अभी के लिए बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Sir, How many have completed? Let me confirm that how many have completed the exercise? Abhinav Pandey, okay, not Abhinav Pandey, Abhishek Pandey, try to write before joining, rename yourself. From the next Yeah. time you need to keep remember this one. Okay, down your hands. So beta, in in today's session we are going to study, we are going to start the grammar junction. Abhishek, down your hands beta, everybody down your hands. In grammar junction, today we will talk about the active and passive voice. I hope about active voice and passive voice already you have studied in your previous classes too. Did you study about the passive voice or not in your previous classes? Yes, sir. Is it new? Is it the new topic for you all, or already you have studied this topic in your previous classes too? fifth class. Abhishek Yadav, beta, your voice is very low. Whenever you speak, please speak loudly. Yes, Abhishek. Sir, in fifth class. In fifth class already you have studied. Prachi Jaiswal, Sir, in his sixth class. in sixth class also you have studied. Acha, how many are familiar? How many are aware with the passive voice? Show me your hand. How many are aware? How many already aware with the passive voice? Please be honest for this, so that because through this activity I would be knowing that how many students are aware, so that we can start as per the situation, as per the knowledge. Prachi, Abhishek Yadav already have studied. What about the rest of the students? Gaurav Tiwari, Ratnesh Tiwari. Muskan, is it new for you? Or already you have No, studied? sir. Already you have also Sir, I have. okay. So beta, starting this chapter, are you getting my voice properly? I'm audible to you all. Actually, the voice and the Yes, picture. Sir, sir. Okay. So do one thing. One of from all of you, one of the person have to read these lines. So who is going to read? Beta, I'm not getting the moving picture from your side. I think there is some network issue. Let me connect with another operator. Let me connect internet from the another device. Just wait. So Muskan Yadav, can you read these couple of lines from the grammar Yes, junction? sir. Yes, please read. Yes, sir. The man you thoroughly despise can rouse your wrath. The rankling wound which etches the
edges and thrills is dealt by the hands we love. Okay. One more person need to read. Akriti Pandey, also you have to read. The man you've thrown despair can roses your words. The Akriti, listen carefully. First of all, Yes, listen sir. carefully. Whatever the other students are reading, listen carefully. What the students are pronouncing it, and how reading this word, you need to take care. Not only this, even all the words you need to listen very carefully. Okay? Abhishek Pandey? Yes, sir. Abhishek Pandey, unmute yourself and read from here. The man you duly despise can rouse your wrath. The rankling wound which etches and thrills is dealt by hands we love. Okay, Akriti, now you have to try. Unmute yourself and now read. The man you throws despair can Beta Akriti, rose what is this? What is this? despair. Despair. Ra kahin pe hai? R kahin pe hai? Where is R? You are not able to Despair. read. Then how will you take out the meaning of this sentence? Despise thoroughly. If you are not focusing on your reading part, then beta it is going to be a big problem for you. When other students are reading, at least try to listen carefully, so that if you are asked to read, then you can read also. The man you thoroughly despise. Okay, listen carefully, everybody. The man you thoroughly despise can rouse your wrath. The man you thoroughly despise can rouse your wrath. What does it mean? How many are able to understand the meaning of this line? The man you thoroughly despise can rouse your wrath. What does it mean? How many are able to understand? But is it line from the poem now? Yes, sir. Yes, sir. So the chapter explanation, the stanza explanation already has been done. Ma'am has uploaded the recorded video of the chapter explanation, and she has explained the meaning of each and every stanzas. Okay, Muskan Yadav, what does it mean? What do you mean by this line? Sir, when someone deceives to us, we does not believe on them other time. The man you thoroughly despise. The man you thoroughly despise. What do you mean by thoroughly? Acha, what do you mean by despise? Sir, believe. You can speak in Hindi. Don't worry. You can speak in Hindi. Sir, Vishwas. What do you mean by despise, beta? Sir, Vishwas. Vishwas. Anybody else? What do you mean by despise? Anybody else who want to speak? Who want to tell? Abhishek Yadav. What do you mean by Yes, sir. despise? सर believe विश्वास ही होता है. Beta, the opposite of believe है. Let's say कि विश्वास अभी नहीं होगा. Despise means घृणा, hate. The man you thoroughly despise. A person that hate you completely, पूरी तरीके से हृदय से घृणा करता हो. ऐसा पर्सन जो आपको पूरी तरीके से यानी हृदय से घृणा करता हो, can rouse your wrath. Can rouse your wrath. What do you mean by wrath? Yes, sir. Yes, Abhishek Yadav. Surrender, क्रोध. कोप, क्रोध, गुस्सा. Yes, What sir. do you understand by rouse? Yes, sir. बेटा मुस्कान and Abhishek के अलावा गौरव तिवारी, what do you understand by rouse?
सर जगाना. Jagana. Okay, anybody else? Muskan? Sir, to give rise. Yes. Jagana, rise karna, uttejit karna. The meaning of wrath is gussa, cope, anger, and rouse is the synonym of rise. यानी उत्तेजित करना, बढ़ाना. ये जैसे गौरव तिवारी टोल्ड जगाना, और it also may be because जगाना एक तरीके से बढ़ाना ही हुआ. तो what does the meaning of this complete line? The man you thoroughly despise. ऐसा पर्सन जो आपको thoroughly despise यानी आपसे completely despise करता है, completely घृणा करता है, can rouse your wrath. वो आपके गुस्से को बढ़ा सकता है. जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकला, the complete meaning of the sentence is the man you thoroughly despise can rouse your wrath. ऐसा पर्सन जो आपसे घृणा करता है, completely ऐसा पर्सन जो आपसे पूरी तरह घृणा करता है, वो आपके गुस्से को बढ़ा सकता है. ऐसा पर्सन, अब वो उस पर्सन के बारे में बताया गया है. द मैन कैन राउज योर रैथ. ये कौन सा मैन? जो आपको थॉरली डिस्पाइस, जो आपको से पूरी तरह घृणा करता है. ये पूरी तरह घृणा करता है. इट इज टेलिंग अबाउट द मैन ना. थॉरली डिस्पाइस क्या है? वर्ब है क्या कोई? इज इट अ वर्ब? क्या ये कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे? थॉरली डिस्पाइस मींस दिस इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैन. Thoroughly despise, these couple of word is explaining about the man. ये मैन के बारे में बता रहा है. ऐसा मैन कौन सा मैन? जो आपसे घृणा करता है, उस मैन के बारे में बता रहा है. The man can rouse your wrath. यानी जो आदमी है वो आपके घृणा को, आपके गुस्से को बढ़ा सकता है. That means who is doing here? What is the subject in this line? The man. The man is subject. And वो कौन सा काम कर रहा है? वो बढ़ाने का काम कर रहा है. क्या? गुस्सा, अपने एक्शन से या जिस भी तरीके से. Now read the second line. प्रखर दुबे, प्रखर द्विवेदी. बेटा अभी ब्रश नहीं किया सुबह सुबह, अभी मुंह से हाथ उंगली से कर रहे हो. पढ़ाई के समय यार पढ़ाई किया करो. Unmute yourself. Now read from here. Yes, sir. The man you thoroughly despise. I'm asking, beta, it means, it shows that you are not focusing. Where I am trying to indicate through this red point, you are not focusing on your study. Just you are sitting in the front of camera. It shows. I'm asking you to read from here. Look into your screen from here. Now read. The man you thoroughly despise Beta, can rouse Prakhar, your wrath. what you are trying, where you are getting the red indicator, spotlight. I hope you are getting the spotlight into your screen, mobile screen. Okay, Prachi Jaswal, beta read. Yes. Read the line where you are having the spotlight. The rankling, Yes, Prachi the Jaswal. rankling, the rankling which hatches and thrills is dealt by hand wheel up. The rankling wound, which aches. It's not HS, beta. CH is pronouncing, CH should be pronounced here as you have heard about the headache. This is that kind of the aches. It's a aches and thrills. The rankling wound which aches and thrills. The rankling wounds. Wounds means क्या हुआ? W-O-U-N-D. Wound means क्या? Wound means. Sir, hurt. Yes, घाव. चोट या घाव. Okay, good. W-O-U-N-D, wound.
wound means घाव, चोट या दर्द, जो भी आपको किसी ने दिया है, मतलब थप्पड़ मार के या अपनी बातों से बोल करके गुस्से में बोल दिया कुछ ऐसी चीजें, बुरा लग गया, and that is also one of the kind of wound. And what do you understand by rankling? Rankling wound. Wait, Muskan, let's from someone else. Everybody have muted themselves. Even Prakhar Dwivedi has stopped their video. None of the students are getting. Okay, Prachi Jaiswal, what do you understand by rankling wound? सर कलता हुआ घाव। कैसा घाव बेटा? सर कलता हुआ। मतलब टलता? चलिए ठीक है, ठीक है। सर जब बहुत हाँ हाँ हाँ, yes yes, explain. प्राची जायसवाल, you were explaining. Okay, don't worry. आपने कम से कम प्राची जायसवाल ने कोशिश किया, that is good. मुस्कान यादव, सर मन को पीड़ा देने वाला घाव। किस तरह पीड़ा देने वाला घाव बेटा? सर मन को पीड़ा देने वाला घाव। रैंकलिंग वुड मीन्स कभी ना मिटने वाला घाव। There is a many wound that seems to be never end. कई बार ऐसे चोट लगते हैं जिससे मुझे लगता है कि हम उबर ही नहीं पाएंगे। Whether it is, ये चाहे मन का घाव हो, चाहे कहीं चोट लगा हो, वो घाव क्यों? The rankling wound, कभी ना मिटने वाले जो घाव होते हैं, जो चोट होते हैं, which aches and thrills, जो हमें काफी दर्द पहुंचाते हैं, काफी पीड़ा देते हैं, is dealt by hands we love. Is dealt by hands we love. ये किन लोगों से मिलता है? जिन्हें हम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। Is dealt by hands, वो ऐसे हैंड्स के थ्रू आते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। बेटा एक्चुअली इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन, कभी कहीं कहीं पे होता भी है। दिस इज जस्ट अ लाइन फ्रॉम योर पोएम, दिस इज जस्ट अ व्यू फ्रॉम अ पोएट, जिसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं, वही हमारे काम भी आते हैं, कोई बाहर ही नहीं काम आता। ओके, so beta, this line in the second line what the sense is getting, what the sense we are getting? The rankling wound, कभी ना मिटने वाला घाव, which aches and thrills, जो कि हमें बहुत पीड़ा देता है, दर्द देता है, is dealt by a hands is dealt by a hands we love, वो उन लोगों के हाथों से आता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। There is a two line already I have explained, and taking these line, keeping through these couple of lines, we would be trying to understand about the active voice and passive voice, because one of the line has been written in the active voice and the second line has been written in the passive voice. But what is the difference? What is the difference between active and passive? Is the meaning of the sentence is getting changed or not? We would be looking into that also. In the second sentence, the rankling wound, ये rankling wound क्या है? जो पीड़ा देने वाला घाव, ये हमें कौन देता है? Which aches and thrills जो है, ये rankling wound के बारे में बता रहा है ना? यस सर। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अगर जो भी है अभी इसको छोड़ दीजिए। इसके तो एक तरीके से the rankling wound is dealt by hand we love. The rankling wound is dealt by hands we love. जो rankling wound होता है, जो खत्म ना होने वाला पीड़ा है, वो जिससे हम प्यार करते हैं उनके द्वारा दिया होता है। The man in the first line, the man can rouse your wrath. कोई भी पर्सन, कोई ऐसा आदमी जो आपके गुस्से को बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है। In the first line, the subject, I hope that you everyone already know that a subject should be having a sentence should be having a subject plus verb and plus Subject. with the help of these three things, these three objects,
with the help of subject, verb and object, a sentence is getting completed. Yes, sir. So if I talk about the subject, can you tell me that in the first line, which word are working as a subject? The man, you thoroughly despise, you thoroughly despise, the man के बारे में ही बात कर रहा है. The man can rouse your wrath. Which one is the subject in the first line? Sir, the man. The man. The man is the subject. Sir, the man. And what is the action is going on here? Which action is going on here? Which is the verb? Rouse. Rouse can is also the helping verb. Sir, thoroughly. Can is also working as a helping verb. Can rouse. Rise से rouse बना है, एक तरीके से कह सकते हैं. Rouse your wrath. किस चीज पे एक्शन किया जा रहा है? The action is being done on which object? तो एक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? What is the result of action? Wrath. गुस्से को बढ़ाया है. Sir, wrath. That means कि here the man is working. The action is being done by which thing? Which word? The action rouse is done by the wrath or the man? Man. द्वारा किया जा रहा है यहाँ फर्स्ट लाइन में. इसको The man. The man. That means कि the man is working. The man is doing the action in the first act in the first sentence. The man rouse your wrath. The man can rouse your wrath. जो एक पर्सन आप गुस्से को बढ़ा सकता है या आपके गुस्से को बढ़ाता है, यानी पर्सन जो वहां पे काम कर रहा है. Now look into the second line. The rankling wood. The rankling wood is dealt by hands beloved. A rankling wood, कभी ना मिटने वाला जो घाव होता है, is dealt by hands beloved. वो हमारे जो अपने होते हैं, जो द्वारा दिया जाता है. Which action is being done here? Which is the action in the second sentence? Is dealt. Dealt. देने का काम दिया जा रहा है. देने का काम दिया जा रहा है. अब क्या देने का? डेल्ट मींस देना एक तरीके से. is also the helping verb. देने का काम कौन कर रहा है? The rankling wood और hands beloved. ये जो The rankling on. rankling wood दे रहा है. No, sir, hands beloved. Sir, hands beloved. ये इसमें क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? Is dealt. जो देने का काम हो रहा है, क्या देने का काम हो रहा है? क्या ऑब्जेक्ट है? क्या ऑब्जेक्ट है बेटा? क्या किस पे काम किया जा रहा है? क्या देने का काम किया जा रहा है? इज डेल्ट. क्या डेल्ट हो रहा है? क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? Rankling wood. घाव, कभी ना मिटने वाला पीड़ा, कभी ना मिटने वाला घाव दिया जा रहा है. किसके द्वारा? बाय हैंड्स बिलव. कौन दे रहा है? जिन्हें हम प्यार करते हैं वो लोग दे रहे हैं. जिनसे हम प्रेम करते हैं वो लोग दे रहे हैं. So that means कि the action in the second sentence, the action dealt is being done by the hands we love. जो ये एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? हैंड्स वी लव. और इससे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है उसे? जब ये ऐसा काम क्या कर रहे हैं? रैंकलिंग वुड, ये पीड़ा देने वाला घाव दे रहे हैं. तो दैट मीन्स कि these are the two lines, and apart from these two lines, now I will be giving you I will be sharing you all a very simple example. Let's say if I ask you all, if I ask you all, let's say this is a mobile phone, and let's say if I ask, अभिषेक ने इस मोबाइल को तोड़ा. अभिषेक ने इस मोबाइल को तोड़ा. Which is this sentence? Which type of this tense is there? अभिषेक ने इस मोबाइल को तोड़ा या अभिषेक ने इस मोबाइल को तोड़ा था, जो भी है. Past tense. Abhishek. पास्ट टेंस. अभिषेक ने इस मोबाइल को तोड़ा. अगर मैं आपको इसको इस तरह बोलूं
यह मोबाइल अभिषेक के द्वारा तोड़ा गया था। तो सर जो there's one more sentence. Ram completed this work. Ram completed this work. And the another sentence is okay. Now look into these sentences. These are very simple sentence. I think it will help you all to understand about the active and passive voice, to differentiate between the active and passive voice. The first line is Ram completed this work. राम ने इस कार्य को कंप्लीट किया था. It is the past tense ना, past indefinite है ना. Yes, sir. yes sir This is the third Yes, form. sir. Yes, sir. This is the third form of the verb. That means कि ये present tense नहीं है. That means कि and there is a no, is, am, or has, a, have. By reading the sentence, you would be finding that you would be observed that this is a past indefinite tense. The mean of this line is राम ने इस कार्य को कंप्लीट किया था. राम यहाँ पर क्या ये कौन सा काम हो रहा है? कंप्लीट करने का काम हो रहा है. कौन कर रहा है? राम कर रहा है. कंप्लीट क्या कंप्लीट कर रहा है? क्या Work. Work. इसी बात को अगर मैं ऐसा कह दूं, दिस वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय राम, इस कार्य को राम के द्वारा पूरा किया गया था. यहाँ पे द मीन ऑफ फर्स्ट लाइन इज इस कार्य को राम ने पूरा किया था. नहीं, लेट्स से द मीन ऑफ फर्स्ट लाइन इज राम ने इस कार्य को कंप्लीट किया था. राम ने इस कार्य को कंप्लीट किया था. राम ने इस कार्य को कंप्लीट किया था. और इन द दूसरे तरीके से मैं क्या कह सकता हूं? इस कार्य को राम के द्वारा कंप्लीट किया गया था. इस कार्य को कंप्लीट राम के द्वारा किया गया या राम के द्वारा किया गया. तो बात तो एक ही आ रही है. Yes, sir. बात तो एक ही आ रही है. Yes sir. So beta, in passive or voice or active voice, the first you have to keep remember that the sense of the each and every sentence should be same. ऐसा ना हो when you are changing any sentence from active voice to passive voice or passive voice to active voice, the sense of the sentence should be not changed and the tense is also should be not changed. ऐसा ना हो कि आप वहां पे जो फर्स्ट लाइन है that is a past indefinite, तो आप इसको अगर पैसिव बनाए तो इसको आप यहाँ पे प्रेजेंट बना दें. ये पास्ट इंडेफिनिट है, देन आल्सो इट विल बी द पास्ट इंडेफिनिट. देयर इज अ सम ऑफ द रूल. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिर्फ एक दिन का नहीं है. टुडे बियॉन्ड योर बुक्स आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट की व्हाट इज द रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करें, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करें. आई विल बी टेलिंग यू ऑल द रूल. So this is not in is there into your this book, but I will be telling in the next session. लेकिन उसके पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मतलब समझ में आना चाहिए. क्या अभी तक क्या समझ में आया? The meaning of the sense of the active voice and passive voice will be the remain same. एक ही बात को दो अलग तरीके से कहा जा रहा है बस. ओके? Yes, sir. Yes sir. अभी जैसे फर्स्ट लाइन आपके जो बुक में एग्जांपल है, द एग्जांपल व्हाटएवर यू आर हैविंग इन योर बुक, द मैन यू थॉरली डिस्पाइस कैन राउज योर रैथ. ऐसा पर्सन जो आपसे पूरी तरह घृणा करता है वो आपके गुस्से को बढ़ा सकता है. इसी चीजों को, इसी बात को, इसी सेंस को हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आपके गुस्से को बढ़ाया जा सकता है. जो आपसे गुस्सा करता है उस मैन के द्वारा, जो पूरी तरह गुस्सा करता है उसके द्वारा आपका गुस्सा बढ़ सकता है उस आदमी के द्वारा, या वो आदमी आपके गुस्से को बढ़ा सकता है. बात तो एक ही हुआ ना. Yes. Yes sir. The rankling wood which aches and thrills is dealt by hands we love. कभी ना मिटने वाला जो घाव, ये हमारे जो अपने होते हैं उनसे मिलता है. जो कभी ना मिटने वाला जो घाव है वो जो हमारे अपने होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है. The meaning of this
लाइन इज दिस, लेकिन अगर इसी लाइन को हम दूसरी तरीके से बोलें, जो हमारे अपने होते हैं वही हमें ना मिटने वाला घाव देते हैं, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा the Yes, sir. conclusion of today's session is there is a many sentences during the spoken. There are many sentences which is being explained here, which is being told in many ways. There is a many sentences. कई सारी बातें ऐसी होती है जिसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं. Just like Hindi, in English also you can speak any of the sentence is many ways. So during the active and passive voice, during learning about the active and passive voice, you would be learning these things. You would be having the many examples, so that you can remember, you can memorize and you can differentiate between the active voice and passive voice. Okay. Now read. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Read the next. Okay. Look at the two sentences. Now, whatever the two sentences we have read, in this paragraph, we are going to study about those things. The subject of the first sentence is the man. What is the subject? Whatever you told, the man is the subject. आप लोगों ने भी यही बताया था. Also, you told the subject of the first sentence is the man. You thoroughly despise. ये ब्रैकेट में लिख दिया है man के बारे में. The subject of the first sentence is the man, and the action it is doing is rouse rap. What is the action? Rouse rap. And in the second sentence, the subject is the rankling wood. The subject is the rankling wood. But ये subject एक तरीके से the subject is rankling wood which aches and thrills. यहाँ पे जो आपका sentence है, सबसे पहले subject आता है, फिर verb आता है, then object आता है. तो passive voice में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट था उसी को सब्जेक्ट बना दिया गया, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया. I will be telling you in the next session how it is being done. In the second sentence, the rankling wood which aches and thrills. Second sentence में क्या है सब्जेक्ट? The rankling wood is what is done by the object, जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता है. Is what is done by the object, the hands below. और जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन वो किसके द्वारा किया जा रहा है? The hands we love, उनके द्वारा जिन्हें हम प्रेम करते हैं. The conclusion for today's session is a sentence in which the subject carries out the action is said to be in the active voice. ऐसा सेंटेंस जहां पे जो आपका सब्जेक्ट है, ऐसा सेंटेंस in which the subject carries out the action, जैसे कि यहाँ पे ऐसा सेंटेंस जिसमें जो एक्शन है वो आपका सब्जेक्ट कैरी आउट कर रहा है, आपका सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को. that sentence should be in the active voice. That sentence in the active voice. कोई भी सेंटेंस लीजिए, आप उसमें ये चेक करिए कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा. जो सबसे पहले आता है दैट इज ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर आपके एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज इन एक्टिव वॉइस. Conversely, a sentence where the subject appears to be acted, ऐसी जगह जहां पे सब्जेक्ट आपको ऐसा दिखाई जा रहा है जो कि आपके एक्शन का रिजल्ट हो सकता है, जिसपे एक्शन किया जा रहा है. जहां पे आपको ऐसे सेंटेंस हो जहां पे सब्जेक्ट पे एक्शन किया जा रहा हो, जैसे यहाँ पे द रैंकलिंग वुड, ये एक्शन ही तो किया जा रहा है, इसमें इसको बढ़ाया जा रहा है हैंड्स बिल अप के द्वारा. द रैंकलिंग वुड को बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है हैंड्स बिल अप द्वारा. ऐसा सेंटेंस जहां पे जो सब्जेक्ट है अगर उस पे एक्शन हो रहा है, sentence where the subject appears to be acted upon by the object is said to be in passive voice. ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाते हैं. The passive voice is made up of the appropriate form of be verb plus past participle. I will be telling you about the rule in detail in the next session. Thereafter we would be solving these exercises, and I hope after getting the rules, after having some of the practices during the live session, you will
you all will be able to solve the exercise by yourselves. Okay. Yes, sir. So Sir, active voice क्या है, इसको समझ में आ गया थोड़ा बहुत या अभी कुछ बताना पड़ेगा? सर आ गया। सर आ गया। Okay, right now we are having 2 minutes left. As of now we are having 2 minutes. So in this 2 minutes, everyone have to give some of the examples. एक ही बात को you all need to tell one sentence in active voice and passive voice both. आपको एक लाइन बोलना है, एक्टिव वॉइस में भी बोलना है, पैसिव वॉइस में भी बोलना है. If you अगर आप if you cannot speak in English, then also you can speak in. आप इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, just but you have to speak a same sentence in 2 way. ये नहीं बोल सकते हैं आप. महिमा वर्मा, first you have to speak. हिंदी बेटा समझ में नहीं आया. I could not get, your voice is breaking. प्राची बेटा you try. Also you can speak in Hindi. Yes, sir. हिंदी में बोल सकती हैं. चलो ठीक है. I'll speak. I'll tell you the sentence. I'll give you a sentence. You have to उसी सेंटेंस को आपको दूसरे तरीके से बोलना है. आदर्श, yes आदर्श. आदर्श is raising hand. Yes. Unmute yourself, Adarsh, and tell the example, beta. Sir, Abhishek owned the game. The game owned by Abhishek. Yes, अभिषेक ने गेम जीता. अभिषेक ने गेम जीता. अभिषेक ने मैच जीता या मैच अभिषेक के द्वारा जीता गया. अभिषेक ने मैच जीता एक तरीके से ये बोला जा सकता है. The second way of speaking this line is मैच अभिषेक के द्वारा जीता गया. Now another example I am expecting from another moment. Who is going to tell another example? Ratnesh. Sir, Ram eat pizza. So the pizza is eaten by Ram. राम ने पिज्जा खाया. पिज्जा खाया गया राम के द्वारा. ओके अभिषेक यादव. Yes, sir. So the things bought by the player and the player bought the things. Player bought the things. Players ने कुछ सामान खरीदे. Players ने सामान खरीदा. Yes, sir. Players ने सामान खरीदा. Player bought the things. The things was bought. The things इसका अगर पैसिव में देखें, buy bought. The things was bought by the players. जो things है, जो सामान है वो players के द्वारा खरीदा गया. मुस्कान यादव. That's to be bought